है। अब हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और सचिन चट्टे अंग्रेजी में। आइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी गोवा चलें। नमस्कार। भारत के खूबसूरत राज्य गोवा की राजधानी पणजी से मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर सचिन चट्टे के साथ आप सभी का इस बहुत ही खास और रोचक प्रसारण में स्वागत करती हूं। गोवा में पिछला एक सप्ताह या यूं कहें कि ये जो 8-9 दिन रहे खूब हलचल भरे रहे। यहाँ की आबो हवा में जो मस्ती है, जो बेफिक्री है और साथ ही जो जोश है वो पिछले दिनों में और ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ चल रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे हम जानते हैं इफी के नाम से। यह फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण है, यानी इससे पहले 53 बार फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है। ये अलग अलग स्थानों पर भी हुआ और अब ये लगातार गोवा में आयोजित किया जाता है। इफी गोवा इसीलिए इसे जाना जाता है। इफी गोवा 2023 का आज समापन समारोह है। ये एक ऐसा समारोह है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि समापन तो इसका होता ही नहीं है, क्योंकि ये आयोजन जब चलता है, जो हलचल होती है उसका असर साल भर तक रहता है और फिर अगला समारोह शुरू हो जाता है। असल में फिल्म निर्माण एक लंबी प्रक्रिया होती है, आप ये जानते ही हैं, और आमतौर पर फिल्म बनाने, रिलीज होने में कम से कम साल भर का समय तो लग ही जाता है। तो जो भी समापन समारोह होता है, उस दौरान जो निर्णय लिए जाते हैं, इस दौरान जो सीखा जाता है, इस दौरान जो योजना बनाई जाती है, जब उसको लागू किया जाता है तो वो अगला समापन समारोह जो होता है शुरू होने से पहले ही बहुत सारी गतिविधियां उसमें शामिल की जाती हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में ये आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की आबो हवा में, जैसा कि हमने कहा, वो मस्ती जो है आज बढ़ी हुई है। बहुत ज्यादा जोश है यहाँ पर। स्टेडियम पूरा भरा हुआ है। एक बहुत विशाल मंच है जो आयोजन के लिए तैयार है और लोग जो हैं यहाँ पर, एक पर्व जैसा इस वक्त माहौल बना हुआ है। कल काशी में देव दीपावली मनाई गई, आज वहां की जगमग यहाँ भी महसूस की जा रही है। Good evening and a warm welcome to this live broadcast that is coming to you live from the Dr. Shama Prasad Mukherjee Stadium in Panjim, Goa, where the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India is all set to get underway. This festival, which was inaugurated on the 20th of this month, it has a fixed date, it has a fixed calendar from 20th to 28th November every year. So this festival, which was inaugurated on 20th November, will conclude today with this closing ceremony where there's lots going to happen, lots of prizes, lots of awards to give away. We have the international competition, of course, which is the big prize of the evening, where the Golden Peacock will be awarded to the best film. There is also an award for the best debut feature film of a director. There is also the ICFT UNESCO Gandhi Medal, for which there is an international jury in place. They are also going to give away the best OTT award, and as we speak we can see the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who's made his way here. He is wearing a nice white suit, bright white suit, and he is here. So we are expecting the formal function for the closing of this International Film Festival of India to start soon. Lots of celebrities are here, and our host for the evening are going to be Mandira Bedi, and we'll find out soon who else is there with her. गोवा के माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है और उनके आगमन पर सम्मान के साथ सभी ने उनका स्वागत तो किया ही, लेकिन जो आयोजन का जोश है वो भी अपनी ओर से उन्होंने प्रकट किया। हम आपको मंच के बारे में बताएं तो एक बहुत ही विशाल मंच है, लगभग 40 फीट लंबा है बाएं से दाएं और लगभग 18 फीट इसकी गहराई होगी। बहुत विशाल भव्य मंच है, रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ है। इफी का लोगो हर तरफ देखा जा सकता है। मीडिया पार्टनर्स के लोगो यहाँ पर लगाए गए हैं और मंच की जो ऊपरी तरफ है वो भी सजावट की गई है, जिसमें हम देख सकते हैं एनएफडीसी का लोगो है, ईएसडी एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, गोवा मनोरंजन संस्था, उसका लोगो यहाँ पर है। G20 का लोगो भी है, क्योंकि सचिन ये साल तो अपने आप में बेहद खास है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो ये जो साल है इस दौरान जितने भी आयोजन है सब किसी न किसी तरह से G20 से जुड़ गए हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लोगो भी, प्रतीक चिन्ह भी यहाँ पर देखा जा सकता है।
स्टेडियम में बैठने की व्यवस्था जो की गई है वो इस तरह से की गई है कि आमंत्रित अतिथि जो हैं वो प्रथम पंक्ति में हैं, साथ ही जो परफॉर्मर्स हैं जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे वो भी हैं, और जो प्रतियोगी हैं जो अलग अलग श्रेणी में जिनकी फिल्में प्रतियोगिता में हैं, स्पर्धा में हैं, जो आज अवार्ड जीतेंगे वो भी प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं। सबके नाम लगे हुए हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक बहुत विशाल जनसमूह यहाँ पर बैठा है। और क्योंकि ये स्टेडियम है तो हम समझ सकते हैं कि इंडोर स्टेडियम में बैठने की जिस तरह से व्यवस्था होती है, जो मुख्य ग्राउंड जो होता है, थल जो होता है, ऊपर की तरफ भी कुर्सियां लगी होती हैं, तो वो कुर्सियां भी इस समय भरी हुई हैं। और यहाँ पर फिल्म प्रेमियों की उपस्थिति है, यहाँ पर फिल्म मेकर्स की उपस्थिति है, यहाँ पर कलाकारों की उपस्थिति है। गणमान्य अतिथि इस वक्त यहाँ स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। विशाल स्क्रीन लगी हुई है, जो भी स्टेज पर होगा वो इन स्क्रीन पर देखा जा सकता है। और साथ ही जो एवीज हैं, जो प्रतिस्पर्धी फिल्में हैं अलग अलग श्रेणी में, उनके एवीज जो तैयार किए गए हैं वो यहाँ पर प्ले किए जा रहे हैं, ताकि एक छोटी सी जानकारी तुरंत पता चल सके कि किस श्रेणी में किस फिल्म की बात की जा रही है। और जैसा कि सचिन ने अभी आपको बताया कि बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग श्रेणियों में प्रतिस्पर्धाएं हुई, इस दौरान बहुत सारी फिल्में देखी गई। ये 9 दिन खूब हलचल भरे रहे, बहुत कुछ इन 9 दिनों में हुआ और बहुत कुछ आज होने जा रहा है इस मंच पर, ठीक हमारी आंखों के सामने। हम आपको बताएं कि जो मुख्य मंच है उसके दाहिनी ओर हमारा कमेंट्री बूथ है। Yes, indeed. Absolutely right. We can see lots of actors, actresses and other artists, film directors who are present here for the closing ceremony. We just saw Vani Tripathi Tikku, who is a member of the steering committee at IFFI, and she's also a member of the CBFC, the Central Board for Film Certification. And all the people who are involved with the organization of this festival, well, they are just making sure that everything falls in place before the ceremony begins. And to tell you about the closing ceremony, well, as we said earlier, that the big moment is going to be when the Golden Peacock will be announced for the best film. And this year the international jury was chaired by Shekhar Kapoor, the well-known director from India who's made films like Masoom. He's also made a film in Hollywood called Elizabeth. There's also cinematographer Jose Luis Alcaine, who has worked extensively with many filmmakers and in the Spanish film industry particularly. And there is Jérôme Paillard, who is also a filmmaker and is a film producer and ex-head of the film market. He has lots of experience in this field, and he's joined by Catherine Dussart, who's also a film producer, and Helen Leek, who is also a film producer. So these 5 men and women, they will decide who is going to win the Golden Peacock today. Along with the Golden Peacock, there are several other awards that will be given away. The best director, a cash prize of 15 lakh rupees. The best film takes home 40 lakh rupees. The best actor 10 lakh, and of course the Silver Peacock. The best actor female also gets 10 lakh and a Silver Peacock. And there's also a special jury award. So there are lots of awards. And of course, there is also going to be the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema. That is going to be given away to Michael Douglas, the well-known producer actor who's acted in several films and a well-known figure in the world of cinema, not just in India, but across the world. He first won an Oscar as a producer for One Flew Over the Cuckoo's Nest, and then later on he won an Oscar as an actor for the film Wall Street, in which he played the character of Gordon Gekko, which has become so very popular and so very synonymous with Michael Douglas. ऑर्सन वेल्स ने कहा था, द सिनेमा हैज नो बाउंड्री, इट इज अ रिबन ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ सपनों का सेलिब्रेशन आज हो रहा है। एक एक फिल्म जो है वो बहुत सारे लोगों का सपना होती है और उन्हीं का सेलिब्रेशन एक तरह से ये है। हमने आपको बताया कि ये 20 तारीख को शुरू हुआ था, 20 नवंबर को आयोजन शुरू हुआ था। तो इस दौरान अलग अलग श्रृंखला रही है, बहुत सारी चीजों की अलग अलग आयोजन हुए हैं, अलग अलग जगह पर हुए हैं और जाने माने चेहरों की इस दौरान उपस्थिति रही। अभिनेता
शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रेया शरण, नुसरत भरूचा, पंकज त्रिपाठी, शांतनु मोइत्रा, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, सलमान खान, विद्या बालन, अनुपम खेर। आप इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों का नाम लीजिए और आपको पता चलेगा कि वो इफी में किसी न किसी तरह से जुड़े रहे हैं। यहाँ पर मास्टर क्लास आयोजित की गई, यानी जो एस्पायरिंग टैलेंट है, जो नई प्रतिभा है, उनको एक मार्गदर्शन दिया जा सके। यहाँ पर इन कॉन्वर्सेशन जो है एक सेशन रहा जिसमें जाने माने चेहरों ने अपने अनुभव साझा किए, फिल्म निर्माण से जुड़े हुए और फिल्म बाजार को लेकर वो क्या सोचते हैं, फिल्म उद्योग जो है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनके अनुभव रहे हैं। नई प्रतिभाएं इस तरह की जो मार्ग निर्देशन होता है वो हमेशा चाहती हैं। तो एक्टर्स भी उसमें शामिल रहे, लेकिन निर्माता निर्देशक भी रहे, संपादक भी शामिल रहे। और जैसा कि कहते हैं कि सिनेमा हैज नो बाउंड्री, तो इसीलिए इफ्फी जो है वो राष्ट्रीय के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा आयोजन है। कान, बर्लिन, वेनिस और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो उसमें अब इफ्फी भी एक जाना माना नाम है। और आपको बताएं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये आयोजन होता है, जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और गोवा सरकार का मिला जुला आयोजन होता है, सब साथ में होता है। और इसमें बड़ी भूमिका रहती है ESG की, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, गोवा मनोरंजन संस्था, इसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। और जैसे ही हम यहाँ पर एक जायजा ले रहे थे आज जो आयोजन होने वाला है इसका, तो स्थल पर पहुंचकर जब हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि समाज के अलग अलग हिस्सों से जो प्रतिष्ठित चेहरे हैं उन सबको बहुत ही आदर भाव से यहाँ आमंत्रित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर अपेक्षित है, CEO ESG रहेंगे, श्री माइकल डगलस की उपस्थिति तो है ही क्योंकि उन्हें दिया जा रहा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो है, क्योंकि सत्यजीत रे अपने आप में सचिन माना जाता है कि सिर्फ एक निर्देशक या निर्माता नहीं थे, बल्कि वो फिल्म निर्माण की एक पूरी संस्था थे। जिस तरह से वो अपने फिल्म के एक एक सीन के लिए पूरी एक चित्र बनाते थे और फिर जिस तरह से अपने कास्ट एंड क्रू को वो समझाते थे, तो वो संस्था जो है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है लिसनर्स मुझे आपको ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि सत्यजीत रे का अपना जो काम करने का तरीका है वो कई देशों में फिल्म निर्माण के जो छात्र हैं उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया भी जाता है। तो ये पुरस्कार माइकल डगलस को दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक संस्था है अब, जो फिल्म निर्माण से तो जुड़े ही रहे हैं, उसके अनेक पक्षों से जुड़े रहे हैं, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेकिन साथ ही सामाजिक तौर पर भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बहुत सारी हिट फिल्मों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के जो कार्य होते हैं माइकल डगलस उनसे जुड़े रहे हैं। Yes, indeed, and we are now all set for the inauguration, or rather the closing ceremony, the start of the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. This year, IFFI has broken records, set new benchmarks and reached many milestones. And to conclude our celebration of 9 days, let's welcome our host, who's an epitome of wit, elegance and charisma. Actor, model, television presenter, and India's most loved face, Mandira Bedi. Mandira Bedi, who's going to be the host for the evening, has been invited on stage, and there she is. Grandeur, elegance और दुनिया भर के अमेजिंग फिल्म मेकर्स से भरे इस स्टेडियम में मैं मंदिरा बेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। And it is a privilege to be hosting this evening in front of path-breaking dignitaries and geniuses of the cinema world. इस साल के इफ़ी को देखकर हम सब सिर्फ यही कह सकते हैं, इतिहास रचते देखना है तो गोवा आओ, इफ़ी आओ और जॉय ऑफ सिनेमा का जश्न मनाते हुए खो जाओ। एक बार गोवा की हॉस्पिटैलिटी, गोवा के लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। They have been absolutely phenomenal. Ladies and gentlemen, आज की शानदार शाम की शुरुआत करने से पहले लेंगे हमारी मातृभूमि का नाम और करेंगे उसे प्रणाम। May I request all those who can to please stand up for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय हिंद। अभी यहाँ पर राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रगान के सम्मान में सभी लोग अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा प्रोटोकॉल है। और साथ ही स्टेज पर जो एक बड़ी सी स्क्रीन है उस पर लहराता हुआ तिरंगा उभरा। तो अब यहाँ का जो माहौल है जिसमें जोश था उसमें अचानक से देशभक्ति और अनुशासन भी महसूस होने लगा। और मंच पर मंदिरा बेदी जो कि मंच संचालिका हैं वो अलग अलग उद्घोषणाएं करती हुई और साथ ही स्क्रीन पर इफ्फी का जो लोगो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और साथ ही रंग बिरंगे पंख उसके घूमते हुए स्क्रीन किया, जिसमें 25 फीचर फिल्म्स और 20 नॉन फीचर फिल्म्स भी थी। एक बार इस जबरदस्त अकम्प्लिशमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग। 20th नवंबर से 28th नवंबर के इवेंटफुल 9 दिन किसी फिल्म से कम नहीं थे। बड़े बड़े सुपरस्टार्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया के हुज हू और सिनेमा डिस्कशंस, न्यूज मेकिंग मोमेंट्स। इफी 2023 सच में एक सुपरहिट, सुपर इम्पैक्टफुल सिनेमा के जैसे था। इसलिए आइए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है जिनमें इन 9 दिनों की सिनेमा सेलिब्रेशन को हमने कैप्चर किया है। Can we please have the 54th IFFI film? There is a small AV, an audiovisual presentation of what all happened at the 54th International Film Festival of India. We can see there's a AV being played on the big screen here. Right from the first day when we had the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakur, who was present for the inauguration, including Dr. L. Murugan, who is the Minister of State for Information and Broadcasting, along with other dignitaries, including the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Madhuri Dixit was, of course, felicitated at the opening ceremony. And that's all that and more is what we can see on the big screen. The entertainment that followed, we had Sukhwinder Singh performing on the stage during the opening ceremony. You can see a glimpse of all that happened. Shahid Kapoor was on stage dancing. The Film Bazaar was inaugurated the next day, which is on 21st. And Film Bazaar, as every year, we saw participants not just from India, but from different parts of the world. One of the most happening events at the International Film Festival of India is the Film Bazaar. And apart from that, there were many other ancillary activities, including masterclasses, in-conversation sessions, and much more that took place during the course of IFFI. We also saw Salman Khan, who came to promote his film called Farre. And of course, सलमान खान को देखने के लिए तो हजारों की तादाद में लोग आए थे। थोड़ा उन्हें लेट हुआ लेकिन वो आए जरूर। जी, और सलमान खान का जो एक मोमेंट था वो मीडिया में छाया रहा जब उन्होंने अपनी एक पत्रकार मित्र जो है वो बहुत बेबाकी से उनसे मिले, तो उसको बहुत सराहना मिली। और जैसा कि हमने कहा कि जाने माने चेहरे इस आयोजन में लगातार नजर आते रहे, तो जो उद्घाटन समारोह था इफ्फी का, उसका एक ईवी इस समय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले ही वो स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो रही हैं। स्टेज पर जो आयोजन हुए, जो परफॉर्मेंसेस हुई, जो नृत्य पेश किए कलाकारों ने, वो यहाँ पर दिखाया गया और जिनकी उपस्थिति रही गणमान्य अतिथियों की, स्टनिंग एंड सो कलरफुल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इफ्फी के लिए। कम ऑन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब हम करते हैं आज की शाम की बात। आज शाम हम सिनेमा जगत की डिग्निटरीज का करेंगे सम्मान, हमारे ऑनररी डिग्निटरीज का सुनेंगे प्रमाण,
नेशनल अवार्ड विनिंग आयुष्मान खुराना की परफॉर्मेंस होगी, हार्मनी ऑफ पाइन्स का नेक्स्ट लेवल म्यूजिक और अमित त्रिवेदी के साथ द रिच वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स ऑफ इंडिया की मस्ती में खो जाएंगे. सो गेट सेट फॉर अ फायरी नाइट जहां हम इफी को कंक्लूड करेंगे और इस साल के मुकाबले के विनर्स को करेंगे अनाउंस. How about one big round of applause for what's lined up ahead? तालियां तो हमेशा गूंजती है, पर कुछ महान हस्तियां होती हैं जो इन तालियों की जिम्मेदारी उठाते हैं. मैं अब मंच पर ऐसे एक हस्ती को बुलाना चाहूंगी जो पिछले साल दर साल इफी को सफल बनाने के पीछे ढेर सारी मेहनत करते हैं. गोवा की जनता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी सांसों को गोवा की तरक्की और इफी के विकास के लिए न्यौछावर करते हैं. इसलिए द 54th इफी स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन जियो सिनेमा एंड कलर्स टीवी के सक्सेसफुल 9 दिनों की झलकी देने के लिए बुलाते हैं उन्हें जो है गोवा के रखवाले, गोवा की जान, गोवा के लोगों की धड़कन, द स्टेलर, द हार्ड वर्किंग एंड द एग्जेम्पलरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत. Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, is being invited on stage to welcome all the guests to this closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. We can also see Ayushman Khurrana there, seated right in front, looking dapper in a blue jacket. But right now, it's going to be Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, who is going to address the gathering. 54th IFFI closing ceremony. Present with me for this closing ceremony, all the ministers, all the MLA, Vice Chairman of the ESG, movie stars, icon and festival directors, Rishib Shetty, Ayushman Khurrana, and I think the Michael Douglas, he will reach soon. The esteemed guests from across the globe, the member of the Indian film fraternity and fellow cinephiles. It is the immense and heartfelt gratitude that I stand before you today to mark the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. At the onset, I extend my greetings to all the winners under the different category. May you continue to inspire more and more talent. I can certainly say this 9-day cinematic extravaganza held in the state of Goa has been the journey of discovery of the celebration of artistry and a testament of the power of the storytelling. Firstly, let us have a huge round of applause to 7,000 delegates who made this festival the vibrant and diverse gathering, the more movies, lovers and from all over the India and beyond. You have made this cinematic fest the memorable one. This year's edition has been the testament to our commitment to fostering an inclusive environment where the diverse voice converge and cinematic excellence thrives. This year's festival showcased the 270 films from 78 countries, and we saw some of the spectacular premieres. As we bid farewell to this vibrant festival, I am overwhelmed by this response it is received. Over the past week, the Goa has been transformed into the hub of cinematic excellence, where this silver screening has been showcased, the calibre of the stories, emotions, cultures, and across the globe. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture. The Cinema of the World segment, hosting over the 103 films, truly exemplifies the richness and diverse of the narrative from the various culture. It has been empowering for our delegates to immerse themselves
in the cinematic extravaganza, witness emerging the trends and engaging with the bright minds at the film bazaar, fostering the platform for the collaborations and discussion. The inaugural Cinemela was a celebration of the India's diverse religion, film, food and culture, understood the sense of our nation's cinematic heritage. This year's the festival has been particularly special for Goa. We have persisted in our efforts showcasing the rich cultural heritage of Goa and providing the platform for the Goan filmmakers to showcase their talent and creativity. The participation of the Goan filmmakers this year, the festival has been truly remarkable as these films have been also received the critical acclaim. This is a testament to the talent and potential of the Goan cinema, and I am confident that it will continue flourishing in the years to come. As we conclude the edition of the IFFI, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for consistent support for the state of Goa. I also heartfelt thank for the Union Minister of the Information and Broadcasting, Mr. Sri Anurag Thakur, and entire organizing team for the tireless efforts for making this festival grand success. I would like to thank the esteemed jury members for their dedication and expertise in screening the best film for this year's festival. The judgment has been instrumental in showcasing the finest cinematic works for around the world. I think we must give a round of applause to the National Film Development Corporation, Entertainment Society of Goa, and National Institute of Design, Ahmedabad, for their collaboration in efforts of making the IFFI 2023 a grand success. Let us also give the round of applause for the Michael Douglas, and who have legendary actor and producer who received the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award this year. Mr. Michael, who would love to see you bring your magic to Goa for your next project. We are eagerly extend, we welcome and lay the red carpet for you in future. With the lush green forest, river, waterfall and quaint villages, with the terraced rice field, and Goa will be the filmmaker's paradise for offering the mix of historic and modern settings for the traditional Goan house for charming streets. When it comes to film locations, we have got the streamlined system for the shooting films, offering hassle-free permits to assess and diverse the locations. Being the Chief Minister of Goa, I also the Chairman of the Entertainment Society of Goa, I promise to extend all kind of support for the hassle-free film shooting and experience. With the incentive worth of the $3.6 million for the international filmmakers filming in India, co-productions as well as the post-production and VFX works and out of India, and the Goa is rolling out the red carpet for you. I stand committed to fulfill the vision of making the Goa is a heaven for the film industry. The plan and underway to this developed infrastructure, providing the cutting-edge technology and incentivize the international filmmakers. And the family, I would like to thank all the cinephiles, the film enthusiasts, film lovers, and who have made this festival vibrant and engage the experience. Your presence and enthusiasm and have been the driving force behind the success of IFFI Goa 2023. IFFI Goa 2023 has been testament to the
unifying powers of cinema. It has brought together the filmmakers, actors, cinephiles from all the corners of globe, creating the space for the dialogues, exchange, and mutual appreciation. As we close this chapter, I invite you all to carry the spirit of IFFI with you. Let us continue the celebrate of the magic cinema to appreciate its power to inspire and cherish the ability to bring the people together from all the walks of life. मैं फिर एक बार जितने सारे कलाकार गोवा में आए हैं इस आज़ादी के अमृत काल में इस IFFI को आपके क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और खास करके हमारे द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में वो पहुंच नहीं सके, लेकिन उनकी तरफ से भी जितने सारे कलाकारों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इस आज़ादी के अमृत काल में जो हमने आगे विकसित भारत का सपना जो देखा है वही सपना सच करने के लिए इन द सिनेमैटिक वे ऑल्सो वी विल सपोर्ट यू इन फ्यूचर। द गोवा गवर्नमेंट सभी फिल्म स्टारों के साथ फिल्म मेकिंग में हमेशा के लिए लगा रहेगा, ये मैं इस IFFI क्लोजिंग के वक्त वादा करता हूँ। और डेफिनेटली हम राह देखते हैं द नेक्स्ट ईयर की आप लोगों को स्वागत करने के लिए हमेशा के लिए गोवा तयार रहेगा। परत एकदा समेस्त गोंयकारांक हांव तुमी दाखयल्ल्या 9 दिसाच्या मोगाबद्दल प्रेमाबद्दल तुम्ही जो मोग सगळ्या कलाकारांक दाखयले आणि व्हडा उपस्थितीत सगळे जाण हांगासर उपस्थित रावले त्याबद्दल तुमचेय सगळ्यांचे स्वागत करता। 9 दीस IFFI तुम्ही मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी एन्जॉय केला। परत एकदा सगळे हांगासर कलाकार उपस्थित आसा त्या सगळ्यांचे नेटान ताळयो वाजोवन तुम्ही सगळ्यांनी स्वागत करचे हे तुमच्या लागीं मागता आणि IFFI क्लोजिंग सेरेमनीक तुमचोय सगळ्यांचे हांव खूब खूब स्वागत करता। देव बरें करूं। The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, addressing the gathering here at the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India. He welcomed all the delegates here and he spoke about the future plans of Goa to promote film tourism. And for your gracious hospitality and efforts. That's what's made IFFI such a huge success. Ladies and gentlemen, IFFI गोवा का हाइब्रिड अवतार हमारे टेक्निकल पार्टनर्स के बिना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसलिए हम हमारे उन टेक्निकल पार्टनर्स को ऑनर करने वाले हैं जिन्होंने पिछले 9 दिन IFFI की बैकबोन बनकर उसका सीमलेस एग्जीक्यूशन किया। और इन पार्टनर्स को फेलिसिटेट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी वाइस चेयरमैन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिस डिलाइला लोबो, Chief Secretary, Government of Goa, Dr. Puneet Kumar Goyal, Festival Director IFFI, Joint Secretary Films and MD NFDC, Shri Prithul Kumar, and CEO Entertainment Society of Goa, Ms. Ankita Mishra. Big round of applause. मंदिरा बेदी ने अभी मंच पर आमंत्रित किया है सुश्री डिलाइला लोबो को, जो कि उपाध्यक्ष हैं ESG की, मुख्य सचिव गोवा सरकार डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल और फेस्टिवल डायरेक्टर IFFI श्री प्रतुल कुमार को, साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी ESG अंकिता मिश्रा को। और इन्हें सभी को आमंत्रित किया गया है ताकि जो टेक्निकल पार्टनर हैं जिन्होंने IFFI के इस आयोजन को सफल बनाने में मदद की है उन सबका सम्मान किया जा सके, उन सबका आभार प्रकट किया जा सके। और इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने NID NFDC और ESG का आभार प्रकट किया कि इस आयोजन को उन्होंने अपनी मेहनत से सफल बनाया। Meanwhile, the technical partners are being invited on stage for making IFFI a success. From Pulse Electronics, Dharmendra Kumar Mishra. From Real Image and Cube, Girish Khandare. Cineonic and Barco, their representative, Mr. K.J. Madhusudan, and also Ujjwal Nirgudkar from SMPTE. So these are the technical partners at the International Film Festival of India who are being presented with a memento for their contribution in making the film festival a success. All the dignitaries on stage are taking their turns to
felicitate How about a the photograph? guests one Can by we have a one. photograph with everyone, please. Ms. Delilah Lobo, the Vice Chairman of Entertainment Society of Goa, Dr. Puneet Goyal, the Chief Secretary, Government of Goa, For your technical support. the Managing Director of NFDC and the Festival Director, Shri Prithul Kumar, and Ankita Mishra, the Chief Entertainment Officer OTT की वजह से of ज़माना ऐसा ESG, हो गया है the कि Chief अगर Executive Officer of the Entertainment Society of Goa. मिर्जापुर देखना है तो लोग यूपी के बजाय ओटीटी ले जाते हैं और अगर कोहरा देखना हो तो ठंड नहीं बफरिंग का इंतजार करते हैं ओटीटी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है और इसलिए इस साल से इफी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स और कंटेंट को इनकरेज करने के लिए द फर्स्ट एवर ओटीटी अवार्ड की घोषणा की है दिस ईयर फॉर द बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी अवार्ड जो सीरीज के डायरेक्टर क्रिएटर और प्रोड्यूसर को दिया जाएगा विनर्स को एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट और 10 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ सम्मानित किया जाएगा इस कंपटीशन में 15 ओटीटी प्लेटफॉर्म से 32 वेब सीरीज ने पार्ट लिया है जिसके बाद ओटीटी जूरी चेयर्ड बाय राजकुमार हिरानी सर ने 4 नॉमिनीज चुने थे एंड द नॉमिनीज आर पंचायत सीजन 2 डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा रॉकेट बॉयज सीजन 1 क्रिएटर निखिल अडवाणी डायरेक्टर अभय पन्नू निर्मल पाठक की घर वापसी डायरेक्टर राहुल पांडे सतीश नायर ह्यूमन क्रिएटर एंड डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह एंड मोजेस सिंह बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर 4 nominees लेडीज एंड जेंटलमैन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसको इन भी nominees अब से एक कोई श्रेणी में एक शामिल है किया winner गया of the है first और जिन web series OTT जो award सीरीज और है उन्हें इस शॉर्टलिस्ट किया award गया को announce उनको करने अब के पुरस्कार लिए दिया मैं जाएगा stage उनमें पर से बुलाना किसी चाहूंगी एक the सीरीज को Honorable Chief सर्वश्रेष्ठ Minister of Goa, वेब सीरीज Dr. का Pramod पुरस्कार सावंत को Please, sir, you're going to be making many trips on stage. The gorgeous acting genius, national award-winning actress, Divya Datta. Big round of applause. And two-time Mandira Bedide inviting the dignitaries on stage to present the award. That includes the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the well-known actress Divya Datta, and she is also requesting Utpal Bor Pujari, the well-known film critic. He is also a documentary filmmaker. He's also made a feature film. He's also a national award winner as he makes his way to the stage and requesting the Honourable greets Minister Dr. to Pramod please do Sawant the on honours, stage. Announce the name of the winner for the first best web series OTT. Here we go. Panchayat season 2. पंचायत सीजन 2 को मिला है बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार और इस पुरस्कार के लिए तकनीकी पक्ष जो है वो भी ध्यान में रखे गए साथ ही जो कहानी थी वो उसका क्या प्रभाव समाज पर रहा किस तरह का अभिनय उसमें किया गया कुल मिलाकर जो प्रभाव रहा उस वेब सीरीज का उसको ध्यान में रखते हुए पंचायत 2 को जा रहा है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार जो कि 10 लाख रुपए का पुरस्कार है साथ ही इसमें जो फिल्म के अलग अलग पक्ष है निर्माता निर्देशक और अगर प्रोड्यूसर जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म ही है तो उनके बीच ये साझा किया जाएगा The makers of Panchayat 2 are on stage. Deepak Kumar Mishra, the director of Panchayat, along with Vijay Koshi, Manish Minghani, and other members of the crew of Panchayat are on stage. They are smiling, and they are smiling for a very good reason because they won the best OTT award at the International Film Festival of India, and that includes a cash prize of rupees 10 lakh as the dignitaries on stage, Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, Divya Datta, the well-known actress, and Utpal Bor Pujari, a filmmaker and film critic himself, who was a part of the jury, are handing over the awards to Panchayat. And this was the second season of Panchayat, which has been extremely popular. Well, the popularity of OTT web series speaks for itself, and the pandemic directly indirectly had a big role to play in it. When people were at home, that's what they preferred to watch, sit at home and watch some movies or some web series.
बिल्कुल जब लॉकडाउन था, जिस समय कुछ भी नहीं था आसपास, उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लोगों का मनोरंजन भी किया, उन तक जरूरी सूचनाएं भी पहुंचाई और जो प्रतिभा थी उस प्रतिभा को बेकार होने से बचाया, उन्हें एक मंच उपलब्ध करवाया और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें उस समय काम दिया जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी काम की। तो ये पुरस्कार पंचायत सीजन 2 को दिया गया और जैसे ही पुरस्कार दिया गया टीम को करतल ध्वनि से यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने इस पल का स्वागत किया, क्योंकि पंचायत 2 सीजन अपने आप में बहुत हिट रहा और उसका जो संवाद थे, उसके एक एक डायलॉग जो था वो भी लोगों को रट गया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी जूरी ने एक और वेब सीरीज सिलेक्ट की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमारे सामने लाया और सबके दिलों को छू लिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रॉकेट बॉयज सीजन 1 डायरेक्टेड बाय अभय पन्नू ऑन सोनी लिव। जूरी के हिसाब से ये वो वेब सीरीज है जो हर किसी को देखनी चाहिए। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर रॉकेट बॉयज सीजन 1, अ मस्ट वॉच इफ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी। Ladies and gentlemen, 10 films from across the globe were competing for the prestigious ICFT UNESCO Gandhi Medal this year. This category encapsulates the timeless ideals of Mahatma Gandhi, endorsed by UNESCO, echoing Gandhiji's philosophy and advocacy for a world rooted in harmony, understanding, and peace. We would like to first felicitate the representatives of ICFT UNESCO, Mr. Serge Michel, Vice President ICFT, and Yuan Hoon, Director of the Platform for Creativity and Innovation. Can we have you join us on stage, please? Mr. Serge Michel. ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के लिए अब स्टेज पर आमंत्रित किया जा रहा है, मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है जूरी को। और ये जो गांधीन स्टडी है, गांधी पदक पुरस्कार है, तो उनके मूल्यों पर आधारित रचनाओं को इस श्रेणी में रखा जाता है और पुरस्कार के लिए इन्हीं रचनाओं में से, इन्हीं कृतियों में से किसी का चयन किया जाएगा। ICFT यूनेस्को पुरस्कार इसे कहा जाता है, गांधी मेडल पुरस्कार। There were 10 films in all competing for the ICFT UNESCO Gandhi Medal, and that included Mandali from India, Rabindra Kavya Rahasya, which is also part of it, and Mallikapuram, the Malayalam film, which is also 3 of the 10 films which were competing for the ICFT UNESCO Medal Award. And Miss Huan Yun from China, who is the coordinator for the ICFT UNESCO Gandhi Medal Award, is being felicitated by the director of IFFI, Mr. Prathul Kumar. And they make their way back to the audience after and now, being ladies felicitated. And gentlemen, is the time to honor the winner of this cinematic masterpiece that stands out as a beacon of peace, tolerance, non-violence, and compassion. The winner of ICFT UNESCO Gandhi Medal is for the film Drift, directed by Mr. Anthony Chen. ड्रिफ्ट फिल्म को दिया गया है गांधी पदक पुरस्कार और जूरी ने ये फिल्में देखी हैं जो इस श्रेणी में शामिल थी। अ हाउस इन जेरूसलम, सिटीजन सेंट, ड्रिफ्ट, इट्सेरा, कालेब, द प्राइजर, बहुत सारी फिल्में इसमें शामिल थी। उनमें से चुना गया है ड्रिफ्ट को इस पुरस्कार के लिए। और अब एक एवी प्ले किया जा रहा है। फिल्म की जानकारी देता हुआ एवी, स्क्रीन पर छवियां उभर रही हैं। That is being played here. Drift, a film by Anthony Chen, has won the ICFT UNESCO Gandhi Medal Award. Anthony Chen is no stranger to IFFI. His film Ilo Ilo was screened a few years ago. Big congratulations. और अब बारी है IFFI के उन अवार्ड्स की ओर बढ़ने की जिसके लिए सब बेसब्री से रुके हैं। The IFFI Awards serve as a hallmark of excellence and an emblem of exceptional storytelling prowess. इस साल IFFI के बेस्ट फिल्मों के विनर्स को चूज करने की जिम्मेदारी थी हमारी इंटरनेशनल जूरी की। A round of applause for our international jury who selected the best of the best.
renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alcaine. Please keep the applause going, ladies and gentlemen. French film producer Jerome Paya. Australian film producer Helen Leake. French film producer Catherine Dussett. And the chairperson of the international competition jury, prominent international filmmaker Padma Shri Shekhar Kapoor. Ladies and gentlemen, the time has come to announce the winners of the 54th International Film Festival of India, streaming exclusively on Colors TV and Jio Cinema. Directors वो होते हैं who breathe life into a script, transform words into captivating images. And our first award is for Best Debut Feature Film of a Director, यानी कि वो director जिसने पहले ही बॉल में छक्का मारा है. And the award goes to Rega Azad Kaya for the film When the Seedlings Grow. A tale which succeeds in showing us a day in the life of a father, daughter, and a lost boy through a succession of small events. An intimate story of the characters as well as a country and its traumas. Let's take a look at the winner clip. When the Seedlings Grow has won the award for the Best Debut Feature Film of a Director, and the award goes to Rega Azad Kaya for the film called When the Seedlings Grow, and the jury decided to give him an award, and that includes a cash prize of 10 lakh rupees and a certificate. 10 लाख रुपए का पुरस्कार, प्रमाण पत्र और साथ ही सिल्वर पिकॉक दिया जाएगा. इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म है ये, और डेब्यू फीचर फिल्म यानी कि पहली फिल्म, किसी भी निर्देशक की जो पहली फिल्म होती है उसी में इनको अवार्ड मिला है. और फिल्म है व्हेन द सीडलिंग ग्रोज, जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है ये गावा स्टिल मेजिन को. ये पुरस्कार दिया गया है रेजर आजाद काया को फिल्म व्हेन द सीडलिंग ग्रोज, और ये सिल्वर पिकॉक पुरस्कार इमोशन का आर्किटेक्ट बनकर उस रोल को ऐतिहासिक बनाया है. द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मेल गोज टू पोरिया रहमी सैम फॉर द फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स. Well, it's no surprise that Endless Borders has won the award for Best Actor. Showing us the richness of acting and interacting with his partners, children and adults in challenging shooting conditions. Can we have the winner clip, please? बेस्ट एक्टर मेल यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, और उस पुरस्कार में सिल्वर पिकॉक है, प्रमाण पत्र है और साथ ही 10 लाख रुपए की धनराशि है. ये पुरस्कार दिया गया है अभिनेता श्रेणी में, और श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता. Endless Border, it is set on the Afghanistan and Iran border, and it's a story of a couple that is looking for a better life. Here or not? हमारा अगला अवार्ड ऐसी अदाकारा के लिए है जिसकी आर्टिस्ट्री ने हमारे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बढ़ाया है और जिसका परफॉर्मेंस क्रेडिट रोल्स खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिलों में बसा रह गया है. Our next award is for Best Actor Female. Ladies and gentlemen, put your hands together for the winner, Melanie Thierry, for the film Party of Fools. An actress whose range of expressions gives us, with subtlety, all the emotions from hope to despair encountered in her character's crazy journey. Can we have the winner clip, please? The Best Actress award goes to Melanie Thierry for a film called Party of Fools, directed by Arnaud de Palais. And this award also carries a cash prize of rupees 10 lakhs and the silver peacock, and of course a certificate, and it goes to Melanie Thierry from Party of Fools. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, French film producer, jury member Jerome Paya, and the mesmerizing voice of India, Hari Haranji, to please come on stage.
So the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, along with jury member Jerome Paya and the well-known singer Hariharan are being invited on stage to present the award. And on behalf of Melanie Theory, Miss Juliette Gramont is going to accept the award. Gramont from Institute Francis to please accept the award on behalf of Melanie Theory. So Juliette Gramont is accepting the award on behalf of Melanie Theory for Best Actress, cash prize of 10 lakh and a silver peacock for Melanie's performance in the film Party of Fools. Minister, please stay back on stage. We need you for a few more awards. Thank you, gentlemen, for doing the honors. Yes, thank you very much. May I now invite on stage renowned Spanish cinematographer Jose Luis Alcaine, French film producer, jury member Catherine Dassett, and the charismatic actor and the poster boy of iconic dialogues, Ravi Kishan, to give away the next award. So along with Jerome Paya and in fact now it's going to be Jose Luis Alcaine along with Catherine Dassett and the well-known actor Ravi Kishan, who are going to give away the next award, which is the Special Jury Award, and that carries a cash prize of 15 lakh rupees and a silver peacock and of course a certificate for the Special Jury Award. उस स्पेशल सिनेमा एक्सपर्ट को दिया जाएगा जिन्होंने जूरी के दिल को छुआ है और सिनेमा की दुनिया में एक खास कंट्रीब्यूशन दिया है. It's time now to announce the Special Jury Award, and the award goes to Rishabh Shetty for the film Kantara. So Rishabh Shetty is going to accept the award for his performance in Kantara, which released last year. And this is a Special Jury Award. Rishabh Shetty there wearing a black shirt. And he's beaming with his long hair. I guess he's preparing for Kantara 2, whose trailer was just launched a day yesterday. What was the day before yesterday? Just a couple of days ago. But Rishabh Shetty, a Special Jury Award for Kantara. कांतारा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड, यानी जो जूरी हैं उन पर बहुत अधिक प्रभाव जिस फिल्म का रहा, उस फिल्म के लिए कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को यहां पर सम्मानित किया गया. 15 लाख रुपए की धनराशि और साथ ही सिल्वर पिकॉक और प्रमाण पत्र. और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए उनके लिए यादगार क्षण, लेकिन जूरी के हाथों जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके लिए भी ये क्षण बेहद खास बन गया है. And now I'd like to invite on stage the pride of cinema worldwide, Turkish director who's known for his bold, innovative and independent filmmaking. Please welcome Nuri Çelan, Australian film producer, jury member Helen Leek, and Miss India 2007, one of India's most stylish actresses, Isha Gupta, to give away the next award. So Nuri Bilge Ceylan, whose film About Dry Grasses was the mid-fest film at the festival. He's the winner of the Palme d'Or at the Cannes Film Festival for his film Winter Sleep. He's won the Best Director at Cannes, you name it. He's picked up just about every award at the Cannes Film Festival. Best Director, Best Jury. And he is being joined on stage and now, ladies and gentlemen, it's by time Isha to Gupta. honor the captain of the ship, जिनसे पूछे बिना एक पत्ता भी सेट पे नहीं हिलता. The award for the best director this year goes to Stefan Komandarev for the film Blaga's Lessons. So Blaga's Lessons is going to win the Best Director award. It's a very interesting story of an elderly lady who has been conned by somebody on the phone. We hear of a lot of these phone scams nowadays, mobile phone scams. And that's the story of Blaga's Lessons. The director is Stefan Komandarev. And this film is from Bulgaria. He's a student from the Bulgarian university who studied film and direction.
ब्लागास लेसन्स ये फिल्म का नाम है और इसके लिए दिया गया है, श्रेणी है बेस्ट डायरेक्टर यानी निर्देशन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 15 लाख रुपए की धनराशि, सिल्वर पीकॉक है और साथ ही प्रमाण पत्र है। भारतीय राज्य गोवा में इस समय पुरस्कृत किया जा रहा है विदेशी कला को और इसीलिए कहा जाता है सिनेमा हैज नो बाउंड्रीज। कला जगत, भावनाएं सब जगह एक जैसी होती हैं और बहुत ही समसामयिक विषय पर बनी एक फिल्म। Yes, indeed. The award is being accepted by the two actresses who are present here. Elise Korcheva, who plays the lead role of Blaga, and Rosalia Abergin. She's also here to accept the award on behalf of Stefan Comandare for the film Blaga's Lesson, for which he's won the Best Director. And as we speak, there's lots of movement happening in front of us because the Satyajit Ray Lifetime Achievement Awardee Michael Douglas is here. And what is more important, he's not alone. He's also with Catherine Zeta-Jones, his wife and well-known actress, and their son, Dylan Michael Douglas, is also here. All eyes are on Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones right now. But it's time now for the Best Film Award, which will be announced next. मंच पर पुरस्कार प्रदान किए जा रहे थे और जैसे ही माइकल डगलस की यहाँ पर एंट्री हुई, उनके आगमन के साथ ही हलचल बढ़ गई। लोगों ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया, साथ ही जोर से अपना जोश उन्होंने प्रकट किया। और माइकल डगलस सब परिवार यहाँ पर हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने सुपुत्र के साथ, जो उनका योगदान भी कला जगत में बना हुआ है लगातार। IFFI, and the award goes to Endless Borders, director Abbas Amini, producers Kaveh Farnam, Farzad Pak. Crossing borders is about how complicated physical borders might be, yet nothing can be more complicated than the emotional and moral borders that you impose upon yourself. Film festivals, after all, are about crossing borders, and in the case of this film, the director has crossed political borders at the cost of his own freedom. Can we have the winner clip, please? Endless Borders, directed by Abbas Amini, is the winner of the Best Film Award, the Golden Peacock. Cash prize of 40 lakh rupees. As you were saying earlier, the story is set on the Afghanistan-Iran border, and it involves a teacher who has been exiled from the city, and he has to spend time there, and he has to help a refugee family that has come from Afghanistan in search of a better life. So Endless Borders is the winner of the Best Film. Unfortunately, the winner could not be here today, but congratulations. The award carries the prestigious Golden Peacock, a certificate and a cash prize of 40 lakh rupees. That's a big one. सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया एंडलेस बॉर्डर्स को। विजेता इस समय यहाँ नहीं आ सके, लेकिन 40 लाख रुपए का पुरस्कार, साथ ही गोल्डन पीकॉक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और श्रेणी में एंडलेस बॉर्डर्स, जो कि हमारे पड़ोसी देश जो है, वहां पे जितनी भी हलचल, जितनी परेशानियां रही, एक फिल्म के माध्यम से, कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो हमारे आसपास जो कुछ घट रहा होता है उसे स्क्रीन पर उतारना, उस समय को हमेशा के लिए बांध कर रख लेना है, सहेज कर रख लेना है। फिल्म का विषय कुछ ऐसा ही। And as we speak, Shekhar Kapoor, the chairperson of the jury, the international jury, is being invited on stage, and on his way he's greeted Michael Douglas, who's sitting right in the front there with Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa. He just shook hands with Michael Douglas and his wife Catherine Zeta-Jones, and now he is making his way to the podium to deliver his address. Shekhar Kapoor. Oh my God, there's so many people here. All right. Hello, everyone. You know, as head of the jury, what everybody asks me is, did you take the films really seriously? Did you all agree on everything? And I have one answer to that. If two creative people agree creatively on everything, then one of them is lying. One of them is not telling the truth. Of course we didn't agree. Of course no creative people agree with each other. But that's the job of a jury. The jury, what they do is sit down, argue, and say, no, you're wrong, and become enemies. And by the end of the day, we become friends again and start all over again the next day. So we take every film seriously because, as Michael knows, it's so difficult to make a film, right? You have a script,
nobody wants to listen to your script. Then you get someone to listen to your script, and then you say, where's the money going to come from? And then you find the money, and then there's a studio head saying, no, something else. And you work for years to try and get a film made. So every film that we saw deserves all of attention. And my jury members, thank you so much for bearing with me. Thank you so much for all the hard work. Thank you. You know, I'm getting frightened. There's so many people here. Hi, Goa. So, film's important. Why is a film festival important? In the context of what's happening in the world right now, with the amazing conflicts that are going on, with the wars at all our borders going on, it's very important to tell our stories. We have to tell the story because our stories are who we are. And if we tell our stories to people and people listen to each other's stories across borders, across everywhere, then we'll understand each other because stories are fundamentally about being human. And films fundamentally, ultimately, all stories about who you are, what your culture is, who are you as a human being. And so being human is the most fundamental aspect of all art. And there is nothing that you can do without understanding who you are. I remember when I made Elizabeth and I said, hang on, I'm Indian, why am I making a film about this great British queen? And I went to Kate Blanchett and I said, Kate, there's only one way to make the film. Let's find out who the human being was beneath the character. Find the human being under every story. Share your stories. And that's why film festivals are important. That's why we all have to share our stories, especially with what's happening in the world now. So, Pramod Sawantji, thank you. Thank you for hosting this great festival. I remember when we first started this festival to say, it's Goa, nobody's going to come films. Just look around yourself. Thank you, Goa. You are the guys. Goa makes this festival go. Thank you, Michael. Thank you, Catherine. Thank you for coming here. It's all my love to all of you. Thank you. शेखर कपूर जूरी चेयरपर्सन, उन्होंने अभी यहाँ अपना वक्तव्य दिया। सबका एक बार फिर से उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया और बहुत बहुत आभार उन्होंने प्रकट किया। फिल्म्स की जो कहानियां हैं वो वैश्विक हैं, वो सब जगह साझी हैं और प्रासंगिक हैं। For a gentleman we are also very, very proud of. और अब नेक्स्ट ऑनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया के उस ब्रिलियंट एक्टर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, हु इज एन एपिटमी ऑफ पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस एंड नेक्स्ट लेवल सिनेमा. His versatility, his relatability, his popularity soars with each and every passing moment. Ladies and gentlemen, please welcome one of India's most loved stars, National Award-winning actor Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana is being invited on stage to introduce the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. He's wearing a light blue color suit as he greets Mandira Bedi there on stage. और मुझे तो लग रहा है कि किसी रोल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी दिन से शेव नहीं किया है. हाँ, हो सकता है और ये कंटिन्यूटी भी हो सकती है कि पहले से शूटिंग चल रही है तो चेंज नहीं कर सकते गेटअप. Center stage, podium, whatever works for you. Where's Andre and where's the boss? Waiting for my cue. I think I should be center stage. All right, go for it. और यहाँ ऑडियंस में गतिविधियां तेज होती हुई क्योंकि सबको पता है कि आयुष्मान खुराना जो है वो एक उद्घोषणा करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है. In this world, I replied, honor, because one cannot buy honor with money. लाख कोशिश करके भी आप सच्चा सम्मान कभी नहीं पा सकते, कभी खरीद नहीं सकते, लेकिन जिनके पास काबिलियत है उनका सम्मान हर जगह होता है. Those who are worthy, who are qualified, who are capable will be honored everywhere. And that's why this genius of cinema is being celebrated and honored all across the world. यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों, the IFFI Satyajit Ray Lifetime Achievement Award honors the recipient's outstanding contribution to the growth and development of world cinema. And what should I say about this man? People read books in order to gain knowledge. Actors like me read him to know about acting. A phenomenon in the world of cinema,
American-born but loved by the world, Michael Douglas. आयुष्मान खुराना ने माइकल डगलस के नाम की घोषणा यहां पर की और फिर से तालियों का एक दौर शुरू हो गया। नाम से सभी परिचित थे, लेकिन उनके सम्मान में इस समय स्टैंडिंग ओवेशन इस समय माइकल डगलस को दिया जा रहा है। उनके इस पल को सभी सराह रहे हैं और तालियां बजाते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। एक ईवी इस समय यहां पर दिखाई जा रही है माइकल डगलस की फिल्म्स जो हैं उनकी। Guy on the right is Elliot Lowe, who's a physics professor and intervener. Now the other guy is a nuclear engineer. An artist who's earned the respect he commands. द गॉडफादर का एक डायलॉग है, ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। माइकल डगलस उसको यहाँ पर जीवंत करते हुए अपना जो उन्होंने समय दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, अलग अलग पक्षों को, उससे उन्होंने सम्मान कमाया दुनिया भर में। Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. And if you ask him his success secrets, he humbly and happily shares them. Well, this is a tough enough job. I plan on focusing on this. A brilliant actor and a man of character. If you want to talk about character and American values, fine. Just tell me where and when and I'll show up. Who has never budged from taking up unconventional and challenging roles. I stay. What do you think of that? The winner of 5 Golden Globe Awards, 2 कल माइकल Academy डगलस की Awards, प्रेस कॉन्फ्रेंस and हुई the जिसमें उन्होंने American Film सत्यजीत रे Institute's के साथ बिताया हुआ lifetime अपना समय याद किया फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स के दौरान, और उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों पाथेर, पांचाली और चारुलता का जिक्र किया। आज उन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जा रहा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये पल माइकल डगलस के लिए भी बहुत खास है और सत्यजीत रे के परिवार, उनके प्रशंसकों, उन्हें प्यार करने वालों के लिए भी बेहद खास। So Michael Douglas is getting the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Everybody here in this auditorium, in this indoor stadium to be more precise, is standing there and applauding Michael Douglas for his contribution to cinema as he takes center stage to accept the Lifetime Achievement Award. Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, is presenting him with a shawl that perhaps might be a first for Michael Douglas. He's been to go to India 3 or 4 times before, as he mentioned yesterday, that this is his 4th trip to India. He's been here before, and the first time when he came here, he was looking to do a sequel to Romancing the Stone. It was called Chasing the Monsoon, but that film never quite happened, and who knows, it might happen someday soon now, as Michael Douglas gets ready to say a few words. In fact, he's been presented with a certificate now and the memento from the International Film Festival of India. भारत को सपनों का देश कहा जाता है, कहानियों का देश कहा जाता है, और पूरी दुनिया में जब भी कोई भारतीय किसी विदेशी से मिलता है तो उसकी पहचान में वो बॉलीवुड और साथ ही अमिताभ बच्चन तो बोल ही देता है। तो उस धरती से जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाती है, जहां बहुत सारी विविधताएं हैं, वहां पर माइकल डगलस का सम्मान इस समय किया गया। और अब माइकल डगलस यहां पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए I'd also like to share this honor with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Mr. Anurag Thakur, Minister L. Murugan, and my good friend who's brought me all the way here, Shalindra Singh, for inviting me to take part in this year's celebration. Thank you. It's an honor to stand before all of you tonight and receive the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundless potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. When you've worked in the movie business for as long as I have, it becomes clear that cinema is one of the few mediums
that has the power to unite and transform us. It transcends divisions, whether that be geography, race, language, or even time. When a film touches us on a personal level and makes us laugh, cry, or rejoice, it reveals our shared humanity. And today, our global language of cinema is more meaningful than ever. So before I leave you, I want to take a moment to acknowledge some of the people who laid the foundations for my career. The achievement is as much theirs as it is mine. First, to my earliest mentors, the talented filmmakers, countless crew members and technicians. I wouldn't be here if it wasn't for their passion and dedication to our work together over these past 55 years. Second, to my father, Kirk, who set a high bar with his hard work, his strength, and his incredible stamina. I wouldn't be here if it not for his passion and dedication. And to the public, he was an icon. But to me, he was Dad. And he provided me with a blueprint that led me to be here today. And to my wife, Catherine, and my son, Dylan, that are here with me tonight, along with my other children, Cameron and Karis, thank you all for your love, your passion, your support, and your patience. And finally, thank you to all the audiences all over the world who push us to new filmmaking frontiers. And that's the reason we do this work. So thank you all for having me. It's been a pleasure. Thank you. Michael, it's very surreal standing next to you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yeah. So it's accepting the Lifetime Achievement Award, the Subsidiary Lifetime Achievement Award. To us, so I request you to please stay back. So 2 Oscars, 5 Golden Globes, a Primetime Emmy Award, numerous felicitations, acknowledgements across the world, and you have a glorious filmography. And out of those amazing characters and roles, can you just name one character which stayed with you? Well, Gordon Gekko is hard to get away from in Wall Street, so that would probably be the most iconic character. It affected a lot of people in Wall Street who said, oh, you're the reason that I got involved. And I said, I was the bad guy. I was the villain. But you dress a villain well, be very beneficial. Wow. So Michael, India loves you a lot, and I'm sure everybody has followed your film, filmography, everything. And you love India too. So how many Indian movies have you watched? I've seen RRR. Om Shanti Om is played over and over in our hound. Lunchbox is one of our favorites. And I was fortunate years ago when I was in college taking a cinema course to see some of Sarojit Ray's movies too. So it's been a nice experience. And I would imagine and hope the way that the cinema is going worldwide that we're going to be working more with an Indian director soon sometime. Wow, you took Ray's name, Satyajit Ray's name, and he's one of our pioneers of Indian cinema. And lastly, I would like you to say a few words in Hindi. And it goes like, India मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. Let's go slow. India मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. बहुत से प्यार से कम. Almost there. We'll try once again. It is very cute though. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. That's amazing. So Michael Douglas loves India. We love Michael को बहुत प्यार करता है, जिसका प्रमाण यहाँ इस समय मंच पर है. उन्हें सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया. एक ही दिन में पढ़ लेंगे क्या मुझे? मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं. ये कुछ घंटे जो है वो माइकल डगलस के बारे में नहीं बता सकते. 50 साल उन्होंने इंडस्ट्री को दिए.
Absolutely right, Ayushman. And along with Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, the well-known actress who made a mark in The Mask of Zorro many years ago, sometime in the mid-90s. She also acted with Sean Connery in Entrapment and several other films. She is also there on stage as both husband and wife greet each other, and they are a proud family, and I'm sure their son, Dylan Michael Thomas, will also join them on stage. And Dr. Pramod Sawant is also making his way to the stage. Do the honors and felicitate Catherine. माइकल डगलस और उनके परिवार को इस समय मंच पर यहाँ पर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए रोका गया है। माइकल डगलस मंच पर, साथ ही उनकी पत्नी कैथरीन जेटा जोन्स जो कि जाने मानी कलाकार खुद भी हैं, उनका शॉल पहनाकर अभिनंदन किया डॉक्टर प्रमोद सावंत ने, माननीय मुख्यमंत्री गोवा, साथ में उनके जो सुपुत्र है डिलन डगलस। I wasn't expecting this. I was very happy to just be wife. Just wife, regular old wife. So I'm so glad I put on a pretty dress. Thank you so much, Minister. This is just a real honor, and what an honor it is to meet you. And I'm just our son, Dylan, and I are just generally blessed to be here. So Michael received this honor tonight, which he genuinely was very honored and proud to be associated with such an amazing filmmaker. I'd like to just say thank you to India for welcoming us so very much. We've never been to Goa before, and we thought, okay, we're going to eat different food. It's going to be a different culture that we all enjoy. But the one thing that is steadfast is the generosity and welcoming nature and hospitality of all Indians, whether it's in Goa, whether it's in Mumbai, in New Delhi, in Jaipur. So it was just an honor to come back, and then with this honor, it makes it even more special and memorable. Thank you so very much. Catherine Zeta-Jones there talking about her experiences in India. Obviously, it's not the first time she's here. And Michael, as he said yesterday in the press conference, it was his fourth trip. It is his fourth trip, rather, to India. As everybody stands once again to applaud Michael Douglas. And he's also joined on stage with his wife and well-known actress, Catherine Zeta-Jones. And the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, is also there as Ayushman Khurrana shakes hands with Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones as they make their way back to the audience, to the front seat where they are both seated, and they've got a big smile on their face as well. So everybody congratulating Mr. Michael Douglas, clicking pictures there of this fabulous moment when he receives the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. We have amongst us Asia's largest music promoter, जिन्होंने 72 feature films को produce और release किया है, और इनकी फिल्में 16 national awards जीत चुकी हैं. He was also awarded the best director for his movie Kanchipuram. Ladies and gentlemen, please welcome the man who wears a million hats, the all-rounder, Mr. Shailendra Singh, for a very special felicitation. Mr. Shailendra Singh, who was also instrumental in bringing Mr. Michael Douglas to IFFI here in Goa, is being invited on stage. He's being felicitated. He's also completed 25 years in the film industry, and the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, is presenting a shawl and a memento to him. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अंग वस्त्र पहनाकर, शॉल पहनाकर शैलेंद्र सिंह का अभिनंदन किया और उन्हें एक मोमेंटो प्रदान किया. और शैलेंद्र सिंह ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कोई फिल्म देखते हैं 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे फिल्म देखते हैं और उसके बाद वो फिल्म अपने साथ लेकर जाते हैं. कोई दृश्य तो जीवन भर हमारे साथ रहता है. ये है फिल्म का प्रभाव. Broadcasting Shri Anurag Thakur couldn't be here today, but he has sent us a special message. Can we please see that message? The Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Dr. Anurag Thakur's message is being played here. Dr. Pramod Sawant, Mr. Michael Douglas, Ms. Catherine Zeta-Jones, government officials, members of film fraternity, ladies and gentlemen. Namaskar, a very good evening to all of you. We are at the end of 9 days celebration of cinema. As we bring down the curtains
on this 54th edition of International Film Festival of India. This IFFI edition was truly extraordinary, filled with notable firsts and groundbreaking achievements that showcase the best of filmmaking. We curated the screenings of about 250 films, that is close to 30,000 minutes of viewing across 68 international and 17 Indian languages from 78 countries worldwide. 23 masterclasses and in-conversation sessions were held, which were accessible not just physically but virtually too, and close to 50 gala red carpets organized during the festival really provided a glamour boost to the whole celebration. The diversity showcased at the festival is the living embodiment of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, that brought together creative thinkers, filmmakers, cinema lovers, and cultural enthusiasts from all over the world under one roof. The clarion call given by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is being followed in IFFI also. This year's festival is where we celebrated inclusivity and accessibility. Films were specially curated for specially abled Divyangs, because they are the cinema lovers as well. So cinema lovers, so that they could enjoy the beauty of cinema at big screens with the help of sign language and audio descriptors. We made sure to include more than 40 movies directed by women celebrating their talent. A specially curated section of 7 films restored under the National Film Heritage Mission were screened at the 54th IFFI to the great appreciation of cinephiles. This initiative to preserve precious creative gems of Indian cinema, envisioned by Honorable PM, will witness the restoration of over 5,000 film and documentaries of multiple languages in the 4K digital format, ensuring that a future generation of Bharat can appreciate, enjoy, and be inspired by these great works. While preserving the old is our mission, so is promoting the new. The Film Challenge under 75 Creative Minds of Tomorrow showcased young talent in the creative field. The films presented by these young creative minds were thought-provoking and dealt with very important topic of protecting and preserving the environment. Mission Life, a message that is very close to our Honorable Prime Minister. I am happy to say that 45 of the 75 creative minds have already been offered opportunities to pitch their ideas to the leading companies in the sector. NFDC Film Bazaar expanded its horizons by introducing the VFX and the Tech Pavilion and a documentary section supporting innovation and non-fiction storytelling. Before I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to Mr. Michael Douglas, the world-acclaimed actor and producer, for being here to receive the esteemed Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for the year 2023. I also thank Ms. Catherine Zeta-Jones, an actress par excellence, to have accompanied Mr. Michael Douglas to make this moment special for him and for all of us at IFFI. I express my heartfelt gratitude to the esteemed jury members whose valuable time and dedicated efforts have been instrumental in shaping this edition of the festival. I would also like to convey my hearty congratulations to the winners of the Golden Peacock Awards, the first ever Best Web Series Award at IFFI. The team at NFDC, led by Festival Director, has been working meticulously all round the year to conceptualize and curate the festival. It has been the tireless and dedicated work of the entire team of professionals that you see realized over these days. I would also like to thank the state of Goa, led by Dynamic Chief Minister, along with all the government officials, also the people of Goa, for making this festival
a grand success. Last but not the least, I would like to congratulate all the filmmakers, actors, and curators for making this festival a grand success. Let's carry forward the storytelling spirit, unity, and creativity beyond IFFI. Thank you all for being part of this incredible journey. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय मंत्री केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय श्री अनुराग सिंह ठाकुर यहां पर उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनका वीडियो संदेश यहां पर चलाया गया और संदेश में उन्होंने इफ्फी के इस संस्करण के बारे में बात की, तो साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का भी उन्होंने जिक्र किया, जो कि G20 की थीम भी थी और इस महोत्सव की थीम भी रही वसुधैव कुटुंबकम। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से दिव्यांग जनों की सुविधा को देखते हुए डबिंग्स का सहारा लिया गया, साइन लैंग्वेजेस का सहारा लिया गया, ताकि वो फिल्म में देख सके, फिल्मों से जुड़ सके, फिल्मों को समझ सके। एनिमेशन प्लेटफॉर्म यहां पर इफ्फी में उपलब्ध करवाया गया, OTT को जगह दी गई, संकेत भाषा जो है उसका सहारा लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। And now it's the Managing Director of NFDC and the Festival Director of IFFI, Mr. Prathul Kumar, who will address the gathering and give his thank you speech. Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Michael Douglas, Ms. Catherine Zeta-Jones, Honorable Members of the Parliament and Legislative Assembly seated here, distinguished invitees from diplomatic corps and international delegates, members of the film fraternity from across the world, friends from media, colleagues and officials, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the closing ceremony of 54th IFFI. As the curtains come down on this 54th edition of the International Film Festival of India, I stand here humbled and enriched by the enthusiasm and passion of the participants who grace this festival. This year, IFFI has already been briefed by the Minister that it has been grand in all terms. The number of films showcased and the number of film applications which came from 105 countries were 3 times it used to be earlier. The number of there were 78 countries of whose films were showcased here, and it was a grand success because we also measured that the people who watched the films, the 261 films which were shown, on an average, people found it from very good to outstanding. 224 films were found outstanding. So that's a very, very great thing for the whole curation. But as we come to this end of a spectacular journey, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who has been a part of this and had made this remarkable. First and foremost, heartfelt gratitude for the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur Sahab, for his constant guidance, support, and also his vision that IFFI should truly be a celebration of cinematic excellence and cultural diversity. I would like to thank Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, whose indulgence and guidance have helped forge several improvements for the festival. Special thanks to Apurva Chandra, Secretary Information and Broadcasting, and Ms. Neerja Shekhar, Additional Secretary, without whose constant support and encouragement, the organization of this scale was not possible. Our heartfelt thanks to the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, led by Honorable Chief Minister Dr. Shri Pramod Sawant, whose constant support and cooperation have been cornerstone of this event, and also the Vice Chairman of ESG and also the CEO ESG. We also express our gratitude to the National Institute of Design, Ahmedabad, in curating the film festival's branding that has indeed elevated the aesthetic appeal for the festival. I would like to thank the members of the steering committee who constantly guided the festival team. A special thank to our esteemed jury members whose discerning eyes and thoughtful deliberations have played a crucial role in recognizing and honoring the outstanding talent. I would like to thank Mr. Michael Douglas, who graciously accepted the invitation in Cannes extended by our Honorable Minister of State, Dr. L. Murugan, and is here with us today with gracious Ms. Catherine Zeta-Jones and his son Dylan. I would also like to again congratulate Mr. Michael Douglas for his Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for 2023. I would like to convey my hearty congratulations to the winner of Golden Peacock Awards,
A special note of appreciation for our esteemed partners, sponsors, and collaborators. Their support and collaboration has been instrumental in realizing the grand celebration of cinema. Not to miss Wizcraft, Viacom, Amazon, Google, Netflix, and many more, so many more that the list will be full. And they have been really helping in elevating the festival. The festival team of NFDC and the Ministry of Information and Broadcasting, they have been working across several months to plan this festival and tirelessly to realize the grand celebration of this cinema. So, and to the dedicated members of the festival team and tireless volunteers, I offer my sincere thanks. Your hard work, attention to detail, and passion for cinema have made this festival an unforgettable experience. Your commitment to excellence has not gone unnoticed, and I am grateful for the countless hours you have devoted in making this event a success. A heartfelt thanks to all the media representatives, critics, and journalists who have covered the festival. Your enthusiasm and commitment to highlighting the magic of cinema have played a crucial role in spreading the word and creating a buzz for IFFI. I'd also like to highlight that this year, the reach of the festival, not just physically but virtually, has crossed more than 15 million, and we hope that this will cross 30 million by the end of the festival. And I'd also like to thank, last but certainly not the least, I would express my sincere gratitude to the audience, the beating heart of the film festival. Your presence, your enthusiasm, and your appreciation for cinema has made this 54th IFFI a vibrant and a memorable affair for all of us. Your engagement with films and the filmmakers is a testament to the power of storytelling which unites all of us. As we bid farewell for the 54th International Film Festival of India, let us carry with us memories of incredible films, the passionate discussions, and the shared love for cinema. May the spirit of storytelling continue to inspire, and connect us all. Thank you. Until we meet again. Thank you. IFFI डायरेक्टर प्रतुल कुमार ने अभी यहाँ अपना संबोधन दिया, वोट ऑफ थैंक्स था ये। उन्होंने सभी का धन्यवाद किया, केंद्रीय मंत्रियों का, उच्चाधिकारियों का, अपने पार्टनर्स का, मीडिया पार्टनर्स का, सहयोगियों का, और साथ ही फिल्म प्रेमियों का भी, सिने प्रेमियों का भी, जिनकी उपस्थिति से IFFI का ये संस्करण जो है वो सफल हो पाया है। वॉल्ट डिज्नी की सही है, We don't make movies to make more money. We make money to make more movies. इसी भाव के साथ अगले साल इसी जगह गोवा में फिल्म प्रेमियों का फिर से जमावड़ा होगा, फिर से एक सपनों की दुनिया रची जाएगी और फिर से सपनों को सेलिब्रेट किया जाएगा IFFI के अगले संस्करण में। Yes, indeed, the curtains have come down on the 54th International Film Festival of India. For the last 9 days, we saw more than 270 odd movies from different parts of the country, various competitions, and now it has come to an end. There were almost 8,000 delegates who gathered here from different parts of the country, watching movies from 9 a.m. in the morning till 11, 12 at night. And well, it was almost state for many of them where their eyeballs turn square watching movies, 3 movies, 4 movies a day. But now the curtains have come down on the 54th International Film Festival of India, with the film Endless Borders winning the Golden Peacock and a cash prize of 40 lakh rupees, taking home the big prize. And that's a film from Iran, Endless Borders. So this broadcast was brought to you from the All-in Akashvani station of Panaji, Goa, led by Sunil Bhatia, Vimlan Jyoti Nathan, Prakash Akolkar, Sanjay Punalekar, Damodar Atlekar, Pramod Kumar, P.V. Ravindran, Suhasya Chari, Gurudas Gavas, and my co-commentator Neelam Malkania. This is Sachin Chatte saying goodbye and taking you back to the studios. It's bye-bye from Panji, Goa. अभी आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा से भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और सचिन चट्टे अंग्रेजी में। You were listening to a live broadcast of the closing ceremony of the 54th International Film Festival of India from Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium, Panaji, Goa. Our commentators were
Neelam Malkania in Hindi, and Sachin Chatte in English. Originated by Akashvani Panji, Goa, this broadcast came to you from Delhi station of Akashvani. बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते